Hello, dear friends. This is Sanchit, and I'm here with week two. First of all, my whole we are from Datacharya team, and our purpose is to help you in the graded assignment and practice assignment. And my whole motto will be the time is 9, and I will take a session of 1 hour 30 minutes till 10:30 and so please ensure that you ask your questions and all in the message. You can, if you are not able to solve, I will unmute you and you can ask there also. So starting with week two, it is all about data pre-processing and data pre-processing. These are the learning objectives. Load a data set using pandas, inspect its structure. Although for the last video and for this video, I will update all materials by today, the collab files and all, which will be helpful for you to go through that. Basically, for this material is related to the assignment we are going through week two. First practice assignment, then graded assignment. Basically, this data set which we will go to work on is a data set which has features X and target Y. V1, V2, V3, V4, V5 is the feature column, and the target column is Y. Right? This is simple. Inspecting safe, df.safe, counting input features. Whenever you see whenever you have given you have been given a data, you need to identify that which is the target column, and always the feature will be one less than the number of columns, right? Now this week is also about understanding or catching that which type of machine learning problem it is. This is a table. If the target variable is a continuous numeric target, it will be always be a regression problem. You know, y is equal to mx plus c. And more regression is it's not linear. It can be quadratic regression. It can be polynomial regression and all. But what we read is y equal to mx plus c. X is the features, and m is the coefficient variable, coefficient vector. Everything is vector here. Understand it. Okay. Y is a vector, m is a vector, x is a vector, c is a vector. For a linear regression problem. So if the target is, I can write you okay. It will be more complex. Polynomial regression also. Polynomial regression means we can express a target variable in terms of a polynomial. Every right understood. Every features and all. Classification. How we can understand the problem is the classification if we have the categorical variable and discrete target. Categorical variable and discrete target means the target variable is discrete, not it's continuous. Like regression, continuous means 1, 1.1, every value from 1 to 1000 it can take. Every value, every real value. And discrete means 1 to 10, every integer value it can take, right? It is a discrete sense. Integer and real. You know, 1.1 is a real, but 1.1 is not an integer. That's the issue. So categorical means you have gone through the course earlier. I think it would be tax 1, and you have understood what is categorical, what is discrete. Clustering, if you don't have a target column, basically if you don't have a target column, you group the customer by behavior. And
same as association rule mining is no target, find item relationship. An example is market-based analysis. Mining, you can understand like this. If there is a large data set, it is used by companies like Amazon, Flipkart and all. They have large data set of people and they analyze an association between them. Basically, you can take an example like that. If a person buys milk, definitely it will buy bread. So how this relationship comes? This comes to association rule mining. Basically, mining the association rule between two features and all. It is based on based basket analysis, and it is very important. Now we are detecting and handling the missing value. Basically, we now we are working on detecting and handling the missing value. Why? We need to remove the missing values from the data because if we train, basically missing value are not always null. Sometimes it is written as question mark, and if left untouched, the panda would treat column as a text object data type instead of a numeric, making the downstream calculations. Now, downstream is the calculations for machine learning, model training, teacher engine. No, first of all, EDA, exploratory data analysis, for feature engineering, for model training, for analysis part and all. So we know this function df.replace and np.nan. It's not, yes, nan, not nan. Convert the column to proper numeric type. We can convert any column to proper numeric type, and we can also count the numbers of question mark uh, in the data, right? This is a variance formula. Variance क्या शो करता है? Variance quantifies how the spread out values feature are around its mean. Basically, I can show you an example. This is mean. ये mean है. This is mean. और ये सारे data points are around the mean, right? इसका variance as comparison to ये line नहीं है, dot है सब. ये mean है. इसका कम इसका variance would be less, इसका variance would be more because spread out. And feature with large variance has widely scattered value. Feature with small variance has values clustered tightly together, right? Okay. Outlier detection. Basically, outlier क्या होता है मैंने फिर दिखाता हूँ example, very example, good example. Normal distribution कोई curve है, जैसे हमारे डेटा है ना, डेटा की कुछ वैल्यूज हैं एंड ऑल एक भी कॉलम्स में, and most of the values lie here. Not, this is not in the terms of what I say.
नॉट इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार कोई नंबर लाई कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर ये मैंने बनाया है। बेसिकली इट इज द नीचे में कोई नंबर है एंड ऑल, और क्या फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से ये डेटा बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ जैसे ये फ्रीक्वेंसी की कौन सा डेटा कितने बार एग्जिस्ट करना है, राइट। आउटलायर डिटेक्शन जो भी होता है ना, जैसे इस साइड वाले डेटा होते हैं या बहुत कम होते हैं नंबर में, इधर वाले डेटा दे आर वेरी लेस। तो वी our purpose is to exclude it. Why we should exclude it? Because they can distort means, they can be exception, chemistry में exception पढ़ा होगा, they can be exception or they can be wrong, or they can distort means they can distract, they can uh, if we calculate mean on that हमें गलत डेटा मिल सकता है। जैसे चार जगह मुझे वी हैव टू गो फॉर आस्किंग फॉर द मिल्क प्राइस, एक जगह मुझे कहा गया ये दो 20 रुपए का है, सेकंड 30 रुपीज का है इन्होंने, मतलब चलो ठीक है 10 रुपए का, मतलब हो सकता है देयर कुड बी अ चांस, देयर इज अ प्राइस डेविएशन ऑफ 10 रुपीज। बट इफ वी गो टू मार्केट, थर्ड मार्केट, and it is 100 rupees, obviously he's doing fraud, right? तो डेविएशन इतना ही होना चाहिए कि इट कैन बी assumed correctly. So we have defined some statistical rules that which numbers we can say as deviations and which number we can say it is okay, it can be the values and all. So values and all, right? Outlier detections and all. How we can see which is एक तो visual representation outlier का, this is visual detection box plot. Box plots क्या होते हैं? I can show. These are the box plots. फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वी हैव assumed डेटा क्या होते हैं। बेसिकली बॉक्स प्लॉट में कि मैक्सिमम डेटा लाइज बिटवीन द रेंज 5 to 10, जो भी 5 to 15 एंड ऑल, और कुछ डेटा है दे आर लाइंग एबव, विच मीन दे आर लाइंग एज सेपरेट, मतलब एज पर द फ्रीक्वेंसी एंड ऑल। तो आइदर दे कैन बी एक्सेप्शन एंड इट इज, मतलब इट विल अफेक्ट अवर मॉडल ट्रेनिंग ऑल्सो, आवर मीनिंग ऑल्सो डिस्टॉर्ट कर देगा if they are wrong values. When we go for calculation with a collection of data, oftentimes a person is collecting the data can, मतलब, if there is 1,000 crores of data, there can be exception and all. Exception means there can be a data which is false. So we did this outlier detection so that our result of predicting anything get accurate, right? Understood? This is a box plot, and this is a visual way of seeing our data and detecting the outlier. These are the outlier. The maximum values are lying between range of 5 to 15. How can some value be greater than 75? It is unexpected, it is false data. And the statistical detection of outliers, there's a way. It's called interquartile range. बेसिकली व्हाट वी डी डू, जैसे कोई भी डेटा है, मतलब फ्रॉम जीरो टू वैसे कुछ वो है, मतलब बड़ा डेटा है, बहुत वैल्यूज एंड ऑल है, एक मीन वैल्यू एक मैक्स वैल्यू है, वी टेक मीन एज 0 एंड मैक्स एज 100। और मुझे मतलब होता है ना कि मीन एंड मैक्स 0 से 100 में मैंने बांट दिया डेटा फ्रॉम मीन टू मैक्स, एंड दिस इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल वन इज बेसिकली the 25th percentile. Basically, 0 से 100. The formula can be, how can we divide the formula? Quartile one, basically the data which is at 25th percentile means basically जो हमारे 0 से 100 है,
मुझे देखना है कि वो 25वें पे कौन सा डेटा लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। जबकि अगर 1 पे है तो 25वें पे कौन सा डेटा लाई कर रहा है मीन और मैक्स में। तो 25% ऑफ जो डेटा है, मतलब 0 से 25% जो है वो कहाँ लाई कर रहा है। बेसिकली अगर if the data is if the data is अनग्रुप डेटा में, बेसिकली डेटा अनग्रुप्ड है तो n+1/4 जो ऑब्जर्वेशन है n+1/4 वो क्वार्टाइल वन होगा, मतलब कि इट विल बी बेसिकली द 25th percentile and all. You can say that, मतलब what you can say that quartile means क्या ना कि मीडियन, बेसिकली फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है क्वार्टाइल। if if we divide डेटा the फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि आधा डेटा 50%, आधा डेटा 50%, दो जो फर्स्ट हाफ का मतलब जो फर्स्ट हाफ का मिडिल होगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, मिडिल एलिमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज क्वार्टाइल वन, मतलब द मीडियन ऑफ द फर्स्ट हाफ, median of the first half, and the median of the second half will be quartile 3, मतलब जो 75 परसेंटाइल पे होगा। median of first half will be on 20 परसेंटाइल, और जो क्वार्टाइल 2 होता है वो मिडिल होता है, मीडियन होता है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक रेंज लेते हैं जो 25% है, वो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन जो 25th परसेंटाइल पे है, जो 25 परसेंटाइल पे, उसका डिफरेंस, बेसिकली बीच का डेटा जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है उसका -1/5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। बेसिकली एक एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियसली, फिगर बता सकता हूँ। ऐसे एक डेटा है, फ्रीक्वेंसी है डेटा का, ये क्वार्टाइल वन है, ये जीरो है, ये क्वार्टाइल वन है, ये क्वार्टाइल टू है, ये क्वार्टाइल थ्री है, ये फाइनल, राइट। तो ये जो रेंज है, अगर Q3 - Q1 करते हैं, जो मीडियन वैल्यू है उसका, उसको कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। और लोअर बाउंड क्या होता है, जो Q1 माइनस इंटर क्वार्टाइल रेंज यहाँ पर लाई करेगा, Q1 -1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, और ये वाला डेटा Q3 इंटू 1.5 प्लस क्वार्टाइल रेंज। तो जो डेटा इस रेंज में लाई कर रहा है वही हमारा डेटा वैलिड है, अदरवाइज इट इज इनवैलिड, इट इज स्टैटिस्टिकल रूल, राइट। इंटर क्वार्टाइल रेंज, बेसिकली हम लोग को आउटलायर डिटेक्ट करना है, तो हम लोग फोकस करते हैं वो 50% डेटा से इधर थोड़ा, मतलब बेसिकली इट कैन बी एज्यूम इंटर क्वार्टाइल रेंज का 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज इधर, 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, हम लोग इसको हम लोग अपना डेटा सेट मानते हैं। और आफ्टर दैट हम लोग ये मानते हैं कि दिस इज नॉट इन आवर रेंज। टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो कहते हैं वी नीड टू चेक, it is part of we are doing EDA, exploratory data analysis. We need to check that कि हमारा जो टारगेट कॉलम है कहीं इम्बैलेंस तो नहीं है। बेसिकली आवर मतलब मशीन लर्निंग मॉडल इज ट्राई टू क्या कहते हैं, मेमोराइज। बेसिकली व्हाट हैपन an imbalance data, one where one class has many more examples than others. So what the machine learning model to become biased towards the majority class, मतलब क्या it try to मतलब generalize करने का, पैटर्न लर्न करने का ट्राई करता है। तो if it has more pattern of dominating class, have no more number available for that,
it get biased toward the majority class, resulting in high accuracy, but a poor detection of minority class. To address this, we use technique like oversampling, undersampling, right? So what we do, right? So can no occur for more than 570 nodes, and so obviously they will learn the pattern of nodes and all. So the imbalance data. So we do love sampling technique, resampling technique. बेसिकली सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होते हैं? मतलब देयर टू मेन टाइप ऑफ रिसैम्पलिंग, मतलब बेसिकली डेटा बढ़ाना. तो क्या करते हैं, मतलब what, what we do to reduce for basically what we can say for removing the balance when the data is imbalanced. Basically, there's a majority class, there's a minority class, and we have more data of that type and less data of that yes, more data of no and less data of yes. Then our model can be biased, and because it learned the pattern, it learned more pattern for yes, but uh, it will be biased as it will try to predict as like evaluation metric, precision, and recall and effort. So uh, will be affected on this. Precision means basically what we are predicting is right or not. Recall means that of the right value, it has predicted how much right. Now, how much it has recalled. So for this, we use the technique like there is two techniques: oversampling and undersampling. Oversampling means we try to oversample the minority data, and undersampling means we try to cut down the majority data, and uh, we can do it randomly. We can do random oversampling, random undersampling, but there are some methods like mode in which we create a synthetic minority sample and add for better generalization, and near miss is for undersampling. We try to only uh, have the information which is near the minority class, and basically we only keep more information which is near the minority class of majority class. Then we in undersampling we try to preserve the information of majority class which is near the minority class. Basically, right. Intuition is to keep most informative majority class near the decision boundary, and we can do hybrid and all because it help us to keep a balance between overfitting and oversampling and undersampling. Sorry, oversampling and undersampling. These are the imputing techniques. Basically, all the null values
Replace null values with mean, median, most frequent, constant. It imputation helps where we cannot afford to lose data. अगर हमारे डेटा ही कम और उसमें 50% या मतलब मान लो 10% भी null values है, we cannot remove it because we cannot afford to lose data because data is important for model training and all. So what we do, we replace it with is a function from sklearn dot impute the simple imputer which impute the mean, median, most frequent, constant value, and we have k nearest in an imputer means basically it will take values from the k nearest neighbor. मतलब हमारे पड़ोसी के पास जो वैल्यूज होगा ये उसकी वैल्यूज पे एवरेज ले लेंगे, राइट? एंड दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. Okay, how many rows and columns does the data set have? Are the missing values? How are they encoded? What are the data types of each column? Are the outlier need attention? Outlier need attention. Yes, the outlier need attention. Is the target class balanced? How much this each feature vary? Right? Mhm. Good question. Huh? After you apply mean, you can read these questions and all from yourself. Pandas DF dot variance use n minus 1 in denominator. Why not n? What would happen if you manually compute variance with n? This is a case of given using n instead of n give bias. It is a concept of statistic. Uh, what is the problem that here we divide the variance with n minus 1 because when we collect data, we cannot collect data of whole population. So variance would be of whole population, actual variance. बट हम लोग सैंपल उठाते हैं उस पॉपुलेशन का, तो वो वेरिएंस जो कैलकुलेट करते हैं आउटलायर डिटेक्ट करते हैं इट मे बी इफेक्टिव इफ यू टेक एन, राइट? तो उस वेरिएंस को प्रॉपर बनाने के लिए उस डी डिवाइडेड बाय एन माइनस वन सो दैट लोग बोलते हैं इट सेड दैट 1 degree freedom is used to estimate the mean and the correction prevents the underestimating of the variance, underestimating the two variance. Like, अगर हमारे पास वो whole population है, so we can divide by big N. But if we have one sample, we need to divide by n minus one. It is the concept we go through when we know this. I have gone through the course like stochastic process and simulation, higher statistics course because I'm a student of right maths and all, math and computing and all. So this is a huge advanced statistics concept कि कब and बड़ी can use करते हैं कि to know the actual variance of the data मैं कम कर देता हूँ, right? If you go on higher studies of statistics, you understand more, but it's a simple move. Which slightly underestimates the two population value when working for a sample. We need a variance for a sample, so we do n minus one. It's called Basel's correction. Correction. In interview, it may be asked, so you need to keep in mind, right? After you apply mean imputation to column, does the column variance increase, decrease, or stay same? Basically, अगर mean imputation करते हैं, तो it decrease. आप जैसे कर सकते हो कि हाँ डेटा बढ़ गई, डेटा बढ़ गई, एंड जैसे आप मान सकते हो कि पहले मीन इम्प्यूटेशन के बिना हमारे पास कैसे कर सकते हैं? हाँ
मीन इम्प्यूटेशन से पहले एन डेटा थी हमारे पास, मीन इम्प्यूटेशन का एन डेटा हो गई। मैंने डेटा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, राइट? तो राइट, राइट। एक्चुअली व्हाट वी कैन डू, सॉरी फॉर इंटरप्शन, में कॉल आ गया था। व्हाट वी कैन डू दैट कि फॉर इम्प्यूटेशन, मतलब वी कैन अंडरस्टैंड इन दैट वे कि मीन इम्प्यूटेशन से क्या होता है। तो कॉलम वी कैन फील दैट कि मेरे सारे डेटा जो हैं वो एक लाइन पे अरेंज है। लाइन मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, मैंने एक बनाया था बेल कर, लाइन पे अरेंज है। वी कैन गिव एन इंट्यूशन बिहाइंड दिस। एक लाइन पे सारा डेटा अरेंज है, यहाँ पर कुछ डेटा से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कब बनाते हैं, राइट? यहाँ पर कुछ डेटा है। मान लो मैं जो भी मिसिंग वैल्यूज है उसको मीन के बगल में रख दूं तो हमारा वेरिएंस कम होगा, राइट? अगर मीन, जो मिसिंग वैल्यूज है उसको मीन से ज्यादा दूर भरूं तो हमारा जो बेल कर्व है वो बढ़ेगा, राइट? दिस इज इंट्यूशन कि if we replace the mean, if we impute, if we do the mean imputation, our variance decreases. मतलब it impacts the variance. Imputation doesn't just fill gap, it silently shrinks the variance, right? And this is the intuition behind it. और तुम मैथमेटिकली जा सकते हो और ज्यादा कहीं भी, राइट? Why can K and an imputer give misleading fields if you skip feature scaling beforehand, right? So it is a very good question. So basically, we get the question that why can K and an imputer give misleading fields if you skip feature beforehand? तो what happens कि हम लोग के एन एन में क्या करते हैं, जैसे हम लोग का ये मिसिंग वैल्यू है, तो क्या होता है कि ये एक फीचर, जैसे एक फीचर वन है, इसमें किसी भी कॉलम पे, किसी भी, सॉरी, किसी भी रो पे एक मिसिंग वैल्यू है। यहाँ पर कुछ एग्जिस्टिंग वैल्यू एक्स है और यहाँ पर कुछ एग्जिस्टिंग वैल्यू वाई है, राइट? तो ये फीचर वन है। तो ये फीचर टू जो होता है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ये तीन वैल्यूज होते हैं, राइट? अगर ये जो केनन होता है वो के नियरेस्ट नेबर्स, तो ये इस फीचर्स के अनुसार, इसके जो डिस्टेंसेस के अनुसार, इसके जो नियर है, बेसिकली अगर डेटा सॉर्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे फीचर्स के अनुसार वो करता है, आंसर निकालता है इसका। मतलब अगर हमको इस तीनों का वैल्यू पता है, राइट, तो ये तीनों अगर के नियरेस्ट नेबर है, मतलब के नियरेस्ट इसके लेवल, इसके लेवल, इसका जो वैल्यू डिफरेंस इसके हिसाब से के नियरेस्ट नेबर निकलता है। तो वाई वी नीड फीचर स्केलिंग? फीचर स्केलिंग मतलब बेसिकली 0 से 1 में या 0 से 100 में मेरे को सारा डेटा लाना है, जो भी वैल्यूज है। तो फीचर स्केलिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर, मतलब इसका फीचर जो भी मिन और मैक्स का रेंज है और इसका जो मिन मैक्स रेंज का अलग अलग है, तो इट कुड गिव, जब मैं के नियरेस्ट नेबर इंप्यूटेशन करता हूँ तो इट कुड गिव डिफरेंट वैल्यू, मतलब के एस्टिमेट्स मिसिंग वैल्यू फ्रॉम द नियरेस्ट रो यूजिंग डिस्टेंस कैलकुलेशन। इफ वन फीचर has much larger numeric range than the other, it will dominate the distance metric. It will dominate the distance metric. It will dominate the distance metric. It will dominate the distance metric, which first is essential for k and imputed. ये समझ गए? This is important question कि आपको कोई पूछे, if someone ask you that if
I do directly K and then imputing for a feature for the value we do not have. Then you should stop them. Say that do feature scaling first for the data. Otherwise, it will give the wrong input for the null values. Right? और एक क्वेश्चन है if median imputation is more robust to outlier than mean imputation, then why not always use median by default? Because 10 examples हो क्या करते हैं median is of data middle data, right? Middle data. It doesn't have any मतलब median doesn't have any influence over what the outlier is and all, right? Uh, Actual magnitude of surrounding values, actual magnitude of surrounding values. It only care about the order and position. So it throw away user information when data is rough, symmetric and outlier free. तो क्या होता है when the data is rough, जो आउटलायर जो भी है उसका कोई देर इज नो इन्वॉल्वमेंट इन एनी मतलब एनी देर इज नो एनी कि आउटलायर का कोई मुझे करना नहीं है देर इज नो आउटलायर इट इज रफली सिमेट्रिक वी यूज मीडियन but mean imputation gives the basically mean imputation what does it gives us the if data is symmetric yet mean provides more representative estimate because it considered whole value, right? So mean imputation for well behaved data while median imputation preferred for a smaller when the data is right symmetric आउटलायर फ्री तो क्या होता है कि मुझे कुछ मतलब मुझे कुछ दिक्कत नहीं है कि अगर मैं मीन लूं तो वो आउटलायर का भी दिक्कत आ जाएगा तो मीन इम्पुटेशन इज फेवरेबल देयर बट अगर आउटलायर का दिक्कत है एंड ऑल है तो इट्स मीडियन इम्पुटेशन बिकॉज इट्स वैल्यू इज ओनली डिपेंड ऑन द ऑर्डर नॉट ऑन द आउटलायर तो राइट यही लिखा है मीडियन इग्नोर्स द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ सराउंडिंग वैल्यूज it only create an order so it can throw away usual information when data is roughly symmetric and outlier free. Mean it may preserve more information about the overall distribution when with better choice depend on the presence of skew or not fixed rule. अगर if the data is skewed मतलब most values lies there. तो हाँ तो वो मीन इम्प्यूटेशन प्रिफर हाँ एंड मीडियन इम्प्यूटेशन कहाँ प्रिफर करते हैं व्हेन देयर डेटा इज स्क्यूड मतलब जो जहाँ आउटलायर का इंपॉर्टेंस है आउटलायर दिक्कत कर सकता है वहाँ मीडियन इम्प्यूटेशन लगाते हैं जहाँ आउटलायर दिक्कत नहीं कर सकता है डेटा वेल बिहेव्ड है वहाँ मीन इम्प्यूटेशन लगाते हैं राइट हो गया दिस इज एंड द गोल गिव मी सम टाइम एंड आई विल we have spent a lot of time and वो concepts पढ़ने के now basically I have uploaded the data and there is the data. We know pd.etc, pdf.head, df.info, df. This is new. Basically, in wherever data this क्या करता है ये wherever data में ये column option है data program wherever data में there is a question mark option ये क्या करता है एक मैट्रिक्स बनाता है true false करता जाता है true false after that 2 equal to 1 false equal to 0 ये डॉट सम करता है तो सारे आ जाते हैं कि कितना वो है हर कॉलम में राइट डॉट सम करेगा तो हर कॉलम का सम आ जाएगा राइट डेटा
वो अपलोडेड डेटा इज दिस v1 v2 gp4, और वो कॉलम वाइज जो df डॉट इन्फो है ये निकालेगा। और df देखो, इफ इज इन डॉट है ना, सम डॉट सम, ये क्या हर कॉलम का वो निकालेगा। बेसिकली बोला ना मैंने, diff डॉट इज इन डॉट, वो इंटरनेट मैट्रिक्स बनाता है। मैट्रिक्स में जहाँ क्वेश्चन मार्क वहाँ ट्रू, और जहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं, बेसिकली जहाँ क्वेश्चन मार्क वहाँ ट्रू, जहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं वहाँ फॉल्स बनाता है, और उसको सम करता है तो जीरो हो जाता है, राइट। ऐसे क्वेश्चन मार्क बनाता है, जैसे ये रो है ना, हर कॉलम के लिए जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ ट्रू लिखता है, जहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है वहाँ फॉल्स लिखता है, राइट। ऐसा ही कुछ लिखता है, राइट। हाँ, ये सिंपल है कि हाउ मेनी सैंपल्स आर देयर इन डेटा, तो वो रोज निकालना है, राइट। सही है। हाउ मेनी इनपुट फीचर आर देयर इन डेटा। तो इनपुट फीचर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू फॉर इनपुट फीचर, मतलब बेसिकली मुझे निकालना है कि कितने इनपुट फीचर है, मुझे निकालना है लेंथ ऑफ कॉलम्स। तो मुझे पता है v1 v2 v3 v4 इनपुट फीचर्स है, तो मुझे निकालना है लेंथ ऑफ ये कॉलम और कॉलम इन df डॉट कॉलम, राइट। और कॉलम्स डॉट कॉलम इन df डॉट कॉलम्स, df डॉट कॉलम्स if column start with right, column starts with b, जैसे columns end with b, if call if x in column, ये सब चीज यूज कर सकते हैं, राइट। फाइव इनपुट डेटा सेट b1 b2 b4, और ये पहले एक लिस्ट बनाएगा, राइट। और उसका लिस्ट को बोले क्या निकालना, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज दिस, तो वैसे निकालना है कि मुझे टारगेट वैल्यू देखना है। इफ टारगेट वैल्यू इज डिस्क्रीट इट इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, इफ टारगेट वेरिएबल इज continuous it is a uh, it is a linear regression problem. If there is no target variable, it can be a class, क्या कहते हैं, it can be a uh, what is it called, clustering problem, or it can be a data mining efficient problem, such as basket, basket ball, yeah, market basket analysis, right? Basket market basket, right? Now we need to know, we want to replace, what we do, df, we want to replace every, with that we do what we do, df dot question 4 dot call dot replace question mark with np dot nan, right। और मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ निकालना क्या है, विच फीचर हैज द लीस्ट वेरिएंस, वेरिएंस है तो मुझे फ्लोट वेरिएबल चाहिए, तो मैं डॉट फ्लोट कर देता हूँ,
मैं कर सकता हूँ डॉट टाइप एस टाइप, मतलब अगर मुझे कन्वर्जन करना है टाइप में तो एस टाइप फ्लोट, राइट। और वेरिएंस के लिए सिंपल वी ए आर, skip any को skip करने के लिए जो रोज मैंने है तो skip n is equal to 2. So basically I am writing only those equations which have some meaning and all, right. ठीक है, वेरिएंस निकल गया। V5 को इसीलिए छोड़ दिया कि V5 इज कैटेगोरिकल वेरिएबल, यूनिक में नेगेटिव है, बस एक ही वैल्यू लेता है। विच फॉलोइंग फीचर है द लिस्ट नंबर ऑफ आउटलायर्स। तो वैसा ही ऐसे मतलब हर जगह n को पहले फ्लोट में बदलोगे, उसका वेरिएंस निकालोगे, ये ब्लॉक्स प्लॉट कर सकते हैं इसमें। सब बॉक्स प्लॉट मतलब 1 3 1, मतलब कि मुझे उसको 1 कॉलम चाहिए, 3 रो चाहिए, इसमें फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये बॉक्स प्लॉट करने के लिए हम लोग एसएनएस बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं, राइट। प्रॉब्लम, राइट। हाँ, आउटलायर फंक्शन नहीं बनाया तो कैसे होगा। आउटलायर फंक्शन बनाना जरूरी है। आउटलायर फंक्शन इज फॉर उस वेरिएबल को निकालना, मतलब जो को मतलब वो रेंज बताना कि किस वैल्यू में मेरा रेंज लाई करेगा, तो हमारा सीरीज है लेंथ ऑफ आउटलायर्स एंड ऑल, कि नंबर ऑफ आउटलायर्स इन इस कॉलम में कितने आउटलायर्स है, इस कॉलम में कितने आउटलायर्स है, राइट। तो उसको ऐसे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, Q1 इक्वल टू, Q1 इक्वल टू सीरीज डॉट क्वांटाइल। क्वांटाइल में 0.25 लिख देते हैं। सीरीज डॉट क्वांटाइल में 0.25 लिख देते हैं। और वैसे ही Q3 के लिए, Q3 के लिए 0.75 लिख देते हैं, राइट। 0.75, यू कैन राइट 0.75। और इंटर क्वार्टाइल लेंगे होता है IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q1 और Q3 माइनस Q1, और इसका क्या करते हैं हम लोग, फिर लोअर बाउंड निकालते हैं। लोअर बाउंड, तो ना लोअर बाउंड निकालते हैं। हाँ हाँ, तो क्या होता है Q1 माइनस 1.5, 1.5 इंटू IQR। जैसे अपर बाउंड निकालते हैं, अपर बाउंड इक्वल टू Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। हाँ, तो क्या होता है, यहाँ फिल्टर फंक्शन बॉक्स से लगता है। तो मुझे लेंथ निकालना है, मेरे से कोई सीरीज निकालता है इसे, मुझे मुझे आउटलायर्स निकालना है। आउटलायर्स क्या हो, कितने होंगे, आउटलायर्स का लेंथ निकालना। आउटलायर इसमें क्या होता है, मेरे को भी जब भी मेरे को वो निकालना है, मतलब इसकी सीरीज एक वो है, बॉक्स है, मुझे डेटा फ्रेम है, मुझे उसका फिल्टर करना था सीरीज के अंदर। सीरीज मतलब सीरीज, सीरीज के अंदर सीरीज, सीरीज लेस देन लोअर बाउंड, और सीरीज ग्रेटर देन अपर बाउंड, राइट।
ये टाइप होता है रिटर्न रेंट ऑफ, ये वो देगा आउटलायर, रेंट ऑफ आउटलायर, राइट। हाँ तो बॉक्स कॉलम ऐसा करते हैं, राइट। एक कॉलम यूजिंग का, बॉक्स प्लॉट आउटलायर कितने ये बता, राइट। The sixth question is each of the following is true about target variable. There is an output that has more entries, which has more entries. Basically वो देखना है। अब ये है how many features are missing values in data set. तो df dot is dot sum निकाल दिए, और फिर हर कॉलम का मिसिंग वैल्यू पता चल जाएगा, राइट। देन द फीचर्स ऑफ मिसिंग वैल्यूज। और यहाँ पर एक तो वो है मतलब फिल्टर लगाते हैं जब भी वी नीड टू हैव अ फिल्टर अवर डेटा फ्रेम। ये क्या करते हैं, वो फ्रेम बाहर लिखते हैं और उसका एक वो बनाकर ग्रेटर देन जीरो और करके डीएफ डॉट, इसे डीएफ बाहर लिख कर डीएफ डॉट मतलब नाम कॉलम का लिख के, या एक ही कॉलम है तो पूरे डेटा फ्रेम पे लगाना चाहते हैं तो कॉलम का भी नाम लिखेंगे तो डीएफ डॉट मिसिंग वैल्यू जीरो। क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट फीचर वैल्यू। क्या है ना, अभी व्हाट इज एवरेज फर्स्ट आफ्टर सप्लाइंग सिंपल इनपुट, तो मीडियन लगाते हैं। तो सिंपल इंप्यूट में मीडियन लगाने के बाद इसको ये एक तरीका है कि हाउ वी डू इम्प्यूटेशन। तो ऐसे लगते हैं कि वी हैव इंपोर्टेड सिंपल मीट, यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर रही रखा है, जैसे इंपोर्टेड फ्रॉम एसक्यूएल डॉट इंप्यूट इंपोर्ट, दिस फंक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रॉम एसक्यूएल एंड इंप्यूट, ये क्या करते हैं कंप्यूटर मीटिंग्स में, यहाँ पर जो सिंपल मैंने दिखाया, यहाँ मीडियन लिखते हैं और कुछ नहीं करते हैं, है ना। कंप्यूटर मीडियन फिट ट्रांसफॉर्म, ये क्या करता है, फिट ट्रांसफॉर्म इज फंक्शन, दो फंक्शन फिट और ट्रांसफॉर्म। फिट क्या करता है, फिट फर्स्ट टेक्स द फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू व्हिच नीड्स टू बी इंप्यूटेड, द स्ट्रेटजी मीडियन तो इट्स कैलकुलेट द मीडियन। ट्रांसफॉर्म क्या करता है, इट पुट्स, जहां पे नल वैल्यू वैल्यू है इट पुट्स द मीडियन, ओके राइट। इसलिए V1 ये कॉलम के लिए होता है ना, राइट। तो मीन कैलकुलेट किया, फिर एवरेज मीन कैलकुलेट किया, राइट। हाँ ऐसे होता है डीएम डॉट, हाँ कॉलम है ना। एरर वो वी कैपिटल नहीं, सॉरी, राइट। सिमिलर क्वेश्चन है, केनन इम्प्यूटर्स में हम लोग केनन इम्प्यूटर्स करते हैं, इम्प्यूटर पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, एनपी डॉट के नियरेस्ट मेथड जो मैंने एक्सप्लेन किया ही था। रिप्लेस किया, सिंपल इम्प्यूटर किया, बेसिकली विच एवरेज और सिंपल इम्प्यूटर केनन इम्प्यूटर इज इम्पोर्टेंट। तब ऐसे करते हैं हम लोग इम्प्यूटर केनन डॉट पिक करते हैं, राइट।